Hey guys, assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are well. अभी चल रही है ज़ोरों शोरों से क्लीनिंग. आप देख सकते हो सारे पर्दे नीचे गिरा दिए गए हैं एंड घर बहुत क्लीन था एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट. बट या आई हैव रिमूव्ड ऑल द कर्टन्स. उसके पिलो कवर्स निकालने हैं. बट यस, द रीज़न वाई आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज ईद आ रही है. ईद की तैयारी शुरू हो गई है. More than the Eid, I am waiting for my mother and father to come back. Inshallah, they will be back after Eid. So, इसीलिए भी I want to, zhuzh it up a little bit and they should feel good. That's the factor I'm going behind. Okay, so these are the ones that I have planned to put here, or these ones or those ones. They will all go for wash. These ones are clean, but those I will wash them right now. I'm starting off with the hall and mom's room, and then I will proceed to other places. Bedsheet bhi are change karwaye for that same reason, but pillow covers nahi mil rahe hain. There's a lot of laundry to be done because my brother was all alone here and he didn't do anything much because he is working and all that. तो आज ज़्यादा कुछ इफ्तारी में बनाने का नहीं है एक्सेप्ट फॉर समोसा. सो आई थॉट I will just do it that way. I'll not tire myself up. I will do whatever I can and then leave it rest for whenever I can do it. I'm here for a good week or so. So I should be able to pull it through. Let's see. So that's the update I wanted to give you guys and just making a vlog. So that's all. Super drained because the rosas, the garmis is just not working out for me at this time. But I came to Mysore in the morning at around 7:30 ish, and आज का डेट मुझे याद भी नहीं है. I think आज का डेट 16th होना चाहिए, if I'm not wrong. या आज का डेट 16th है, संडे है, एंड अभी मैं ईद के लिए आई हूँ. तो कर्टन्स मैं वॉश के लिए अभी डाल दूँगी. एंड हमारे वाले पुराना स्टाइल है. एक्चुअली मैं मम्मी को बोल रही थी कि ये वाला ना बहुत सा पुराना हो गया है ये स्टाइल, तो हम लोग थोड़ा सा रॉड के जो एंड के फिक्सचर्स हैं वो सब चेंज कर दें. और ना ऐसे हुक्स पे लगते हैं एंड देन दे गो इनटू दैट हुक. सो दिस गोज़ इनटू दैट. तो मैं सभी के निकाल रही थी ताकि वॉश कर दूँ और फिर फोल्ड करके रख दूँ. एंड वी पुट न्यू वंस फॉर ईद एंड व्हेन दे कम ऑल्सो इट लुक ऑल नाइस एंड क्लीन. आई एम इन दीज स्टिंकिंग क्लोथ्स फ्रॉम द लास्ट I don't know how many, 2 days I guess. I am so sorry, but then I'm so busy. Last का जो week है is really hectic, and ये सारे पर्दे आ गए हैं which we have to put it on the top floor and also in the hall. And अभी मैंने ये नई वाली bedsheet for the दीवान डाली है. फिर मेरे भाई ने ये रग लिया है जो ऊपर डलेगा उसके रूम में. तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आई जस्ट वांट टू विश यू अलविदा जुम्मा मुबारक. एंड ऑल्सो आज चांद रात भी है कोइंसिडेंटली. आज सऊदी में ईद ऑलरेडी हो रही है. मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है. अभी बहुत लॉन्ग वे टू गो. जिस नीचे का क्लीनिंग शुरू हुआ है, अभी ऊपर का भी क्लीनिंग होगा. आई विल टेक अ गुड नाइस शावर एंड देन विल चेंज इनटू नाइस क्लोथ्स फॉर चांद रात. So inshallah, if I wind up everything, I will show it to you guys. But let me show you what all the curtains that I have got. So let me flip the camera right now. This is the rug that I was telling you that I have, that my brother has got for his room. ये पुराना वाला blanket है जो ऊपर चला जाएगा. अभी summers हैं तो we don't need the winter blanket. This is the divan cover that I have got, like this one. With this is the cushions of that. वो ये बॉन्स्टर है. ये बॉन्स्टर का मैं नाड़ा डाल रही थी. लाइक एक साइड का मैंने डाल दिया है. एक साइड का मैंने डाल दिया है. अभी एक साइड का मैं डालूँगी. आई हैव गॉट वन नाड़ास फ्रॉम समवेयर एंड लेट मी जस्ट कीप दिस असाइड. एंड फिर आपको मैं कर्टन्स दिखाती हूँ. I've got the basic brown curtains, like very basic ones. I want to get the expensive ones from D Decor. So for the time being, काम चलाओ types, I've got these. तो मैंने ऐसे बहुत सारे pairs लिए हैं. I got it in blue because one of our room is blue. So I've got it for that. And this is for my brother's room. This goes in between these two. I'll show you guys how it looks. But ये brown मेरे भाई के room में जाएंगे. Got some plain bed sheet. ये मुझे पड़ा 1800 समथिंग का. एंड दैट आई हैव गॉट. एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लेन बेड शीट.
that I've got. I like plain bed sheets a lot, so I got this. It's in the pure cotton material. So this one I got, and then I got one of these. It's a very light yellow, but I don't know कैमरा में क्रीम दिखा रहा है, but this is a light yellow. तो मैंने ये सारे बेडशीट्स लिए हैं. अभी सबके बेडशीट्स डल रहे हैं एक करके. वो गेस्ट बेडरूम के लिए एक बेडशीट निकाल के रखा है. कुछ अमेज़ॉन पार्सल्स आए हैं. ये एरिया मैंने सारा क्लीन कर दिया है. ओनली दिस इज़ द डस्टिंग क्लॉथ. साइड ऑल्सो इज़ ऑल क्लीन, टोटली क्लीन. सो एक करके रूम क्लीन हो रही है. I will show you mom's bedroom in some time. वहाँ पे थोड़ी cleaning बाकी है. I'm just a single human being. I am fussing on top of that. So, it's a crazy time. Okay, मैं जुम्मा के लिए ready हो गई हूँ. As in I took a bath and I'm feeling really fresh. मम्मी पापा, मैं हूँ और एक्सीडेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. सो मम्मी पापा आ रहे हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, और उन्होंने वहीं से न्यूजीलैंड से बैठ के शॉपिंग शुरू कर दी है. कुछ मंगा रहे हैं. पार्सल्स कंटिन्यूसली हमारे घर पे आ रहे हैं. अभी एक और पार्सल आएगा. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. मैं और इसी के साथ ये लास्ट इफ्तियारी थी जो मेरे हस्बैंड के छोटी मासी है उन्होंने ट्रीट दिया था. तो हम लोग वही खा रहे थे. देन आई शूट लिटिल बिट ऑफ इट एंड देन हम लोग मीना बाज़ार आए थे टेलर के पास, जिसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया. अभी तक उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया है. हालांकि ही इज़ जान पहचान वाला, बट उन्होंने बहुत गंदे से हाथ दिया. एंड उन्होंने बोला कि अपने मेजरमेंट दिया ही नहीं, और उन्होंने ना कॉल बैक किया ना कुछ. अभी जिस दिन मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ, 2 दिन हो गए ईद के, एंड अभी तक उनका कॉल नहीं आया, ना उन्होंने फ़ोन उठाया है. एनी विच वेज आई समहाउ मैनेज्ड इट. सो या वही हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे थे एंड पीपल वर गोइंग बॉन्कर्स. यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, कारपेट से लेकर बेडशीट से लेकर छोटी मोटी चीज़ें घर की, और सब कुछ था. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. अभी हो रहे हैं सुबह के 7 बजे एंड आई जस्ट वोकन अप. एज यू कैन सी बाय माय हालत. रात को बहुत लेट सोए थे हम लोग. मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि अभी सेवइयाँ वगैरह बनाऊँगी. My husband has to go for namaz also. So not my husband is in my mother-in-law's house. We are celebrating Eid separately. Somehow we will meet each other in the afternoon. But my brother has to go for namaz. So मैं भी जाके सेवइयाँ बनाऊँगी. No mehndi, nothing. Without mom and dad, Eid feels like nothing, because last 5 years, even after being married, I've always celebrated with my mother and father, it with my husband. So this time when they're not around, it feels so different and very weird. Any which ways, let me just go to the washroom and then go down and see what's happening. Guys, हमारी ईद इतनी प्यारी जा रही है. गैस हो गई है ख़त्म. बाहर लकीली सिलेंडर है, बट भाई अभी आए नमाज़ पढ़ के. मैं बना रही थी शीर खुरमा और सेवइयाँ के लिए भी मसाला बना लिया था, और एकदम से गैस ऑफ हो गई. अभी मन ही नहीं कर रहा है, तो हम ब्रेकफास्ट के लिए खा रहे हैं चीज़ बॉल्स, क्योंकि मूड ही ऑफ हो गया. मेरा भाई ढूंढ ढांड के ले आया है कुछ ना कुछ. बट वी जस्ट रियलाइज़ हुआ कि कल नहीं परसों हमारे ताइमा ने, जो मेरे डैड के बड़े भाई की वाइफ है, उन्होंने भेजा था ये एग और आलू का सब्ज़ी एंड थोड़ी सी चावल की रोटी. तो हम लोग सोचें कि शेयर करके खा लेंगे. फिर बिरयानी का देखते हैं. ठीक है, इसको मैं गरम करती हूँ. देख लो 4 हैं, मैं 2 और मेरा भाई 2 खा लेंगे. फिर थोड़े चीज़ बॉल्स खा लेंगे. फिर इंशाल्लाह देखेंगे, जो होगा सो होगा. मैं एक्चुअली अपना है ना मेकअप कर रही हूँ, ईद मेकअप जो मैं आज करने वाली हूँ. तो मैंने स्किन केयर कर लिया है एंड आई वांटेड टू शो यू अराउंड द हाउस लाइक आई प्रॉमिस्ड. सो लेट मी जस्ट स्विच ऑन द लाइट फॉर अ मिनट.
Yeah, that's better. Let me flip the camera and show you what I did pretty much the last night and the day before. Okay, first of all, I changed the curtains. ये नीचे वाले curtains ही हैं, मैंने wash करके इनको ऊपर लगा दिया because यहाँ के लिए नए पर्दे नहीं थे. और मेरे बेडरूम जो मेरी सिस्टर की बेडरूम है वहाँ पे मैंने पर्दे निकाल लिए हैं, तो मैं उसको वॉश करूँगी. बाय द वे इसकी अभी क्लीनिंग पेंडिंग है, मेरे पास टाइम नहीं था. Okay, this is my brother's bedroom, and this is the curtains we have put in his room. These are very basic curtains. They are very thin and nice. And this is also the bed sheet we got the day before. This is the this is the mat or the carpet area. It's so freaking soft. It's so freaking soft, and I'm not even kidding. Next thing is that we changed curtains for here as well. This is also the same type of curtains that are there in my brother's room, but then to remove the monotony, I added one white curtains so that it looks nicely blended and beautiful. I don't know what that bag is doing. My brother and his mess is a lot. This is the same curtain that was already there. This is a huge window, so we have to get it stitched, or I have to see how big of this is. If it is around 10 feet, then I can get still, but if it is bigger than 10 feet, then I won't get this size. So this is what I did for the upper portion. Let me go down and show you what is happening in the down area. Yeah. So these curtains I haven't changed. They are the same, although they are not matching right now because the entire room of this I have made it into blue. So these curtains are not matching, and the same problem. These are extremely tall, window sills. I'll show you from the down. They're same length as the top ones. उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई ने already mess कर रखा है. Let me just do it off. ओके यहाँ पे भी ना ब्लू लगवाने हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ, जो ऊपर वाले कर्टन्स थे ना, वो जो वहाँ के चेंज करे थे, उसको वॉश करके मैं यहाँ पे लगा दूँगी. दिस सिस्टम ऑफ द कर्टन इज़ ओल्ड, सो दे आर फॉलिंग डाउन. वी हैव टू करेक्ट दैट, बट दिस इज़ द न्यू बेडशीट अगेन आई गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया. आई पुट एवरीथिंग blue except this one I will change very soon inshallah by tomorrow. And pretty much over here I kept the same curtains. Again thoda sa messy lag raha hai, and I'm just showing you the way it is the ghar. I am not doing something really magical and showing you, but of course isko main tidy karungi. Yeah, so this is how this one looks like. These curtains are way better in quality. If I show you, these are satin finish. Abhi lag nahi raha hoga, but yeah, now maybe you can see these are satin finish, so these are much costlier. These I got it online, but यहाँ के कुशन कवर्स भी मुझे चेंज करने हैं. मैंने मंगवा लिए. एक सेट आ गया है, अभी एक और सेट आना बाकी है, तो जब आएगा आई विल शो यू गाइज दैट. Guys, I'm back. I couldn't film much क्योंकि मैं सो गई थी after taking a bath, and मेरे husband जल्दी कर रहे थे, तो फिर I was like जल्दी जल्दी में रेडी हुई, तो सारा कुछ फेंक के चली गई मैं. I couldn't film anything. I was so busy. We both went to a cafe, me and my husband. Just wanted to spend time alone, so we did that. And yeah, pretty much that's about it. Another update is that हम लोग बिरयानी नहीं बनाए इस बार घर में, बिकॉज गैस सुबह में एज यू गाइज नो ख़त्म हो गई थी. एंड फिर हुआ कि मेरा भाई आया 12 बजे, एंड मुझे जाना था अराउंड 1 o'clock टू एट माई इन लॉज प्लेस. फिर मैं सो गई 1 घंटा, फिर 2 बजे गई, और फिर सारे खा चुके थे, गेस्ट जा चुके थे, एंड आई गॉट रियली बैड scoldings kind of in sense, but then no worries. Then I went and I spent time, and I came back just now. I changed my clothes and I then picked up the camera. I don't know क्या vlog बनाया, कैसे vlog बनाया, जो भी बनाया मैं share कर दूँगी. जो मेरे husband ने भी एक clip लिया, उन्होंने ऐसा clip लिया, तो I'll add that clip as well.
इन दी एंड कि जहाँ पे ईदगाह थी वहाँ पे कैसा सीन था वो ऐड कर दूँगी। फिर भाई अभी बिरयानी बाहर से मंगवा लिया था तो वैसे हो गया। अभी इतना सारा लेफ़्ट ओवर है कि आई डोंट थिंक आई विल बी कुकिंग एनीथिंग फॉर अ वीक बिकॉज इतना सारा खाना है अभी। My head's hurting a lot, a lot. I'm so tired, as you can see from my eyes, they are red. They're red as F. So I am going to take rest. जैसे भी तैसे भी ईद गुजर गई है। एक्चुअली मैं मेहंदी के कोन्स भी लेना चाह रही थी बट द प्लेस दैट आई बाय कोन्स शी मेक्स द कोन्स हरसेल्फ एंड वो she was not at home, so I couldn't get cones as well, वरना मैं लगा लेती. But right now with the headache, thank God नहीं मिले. I'm happy that I didn't get it itself. So yeah, I'm just tidying up everything and I'll just hit bed. This looks very weird and bare, but I've washed so many clothes, you guys, and today it rained also on top of that. I'm too tired. I just need to somehow remove my makeup, whatever is remaining, and then crash. I hope you liked this video, and if you did and you appreciate my efforts, whatever tiny, then please do like, subscribe and share it with your friends and family members. Also follow me on Instagram. The links are in the description box and I will add my Instagram handle over here. So yeah, I will end the vlog over here. I hope you guys appreciate it, even though it might be a tiny vlog. I always try to make the vlog as big as possible, but being a married woman, it seems almost impossible to make one vlog. I was comparatively very free today, but still it just spiraled down. Like I just got busy later on. I went to a lot of places, so I didn't want to even capture their faces because they are not comfortable. Yeah, that is it. जब तक वजाहत तोहफा अभी इब्रार विदा की दुआ है, उनसे हमारी गुजारिश है कि जरा तेज कदम के साथ अंदर दाखिल हो, जरा तेज कदम के साथ अंदर। अल्लाह